बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मां मोहम्मदी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल जी सिंधी जी मास्तरियाणी बिल्किस अली अवां सां मुखातिब आहियां। उम्मीद आहे तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। असां नए तालीमी साल 2021 खां 22 जो आगाज़ करे चुका आहियूं। ठीकु आहे। ऐं जेको आहे नई क्लास 8 में मां अव्हांखे ख़ुशि आमदीद चवां थी। जीअं त अव्हां ॼाणो था त नई क्लास में पहिरें ॾींहुं असां अव्हांखे कॉपी जे बारे में कुझु हिदायतूं ॾींदा आहियूं, त उहे मां तव्हांखे कुझु हिदायतूं ॾींदमि। पर हाली जेको आहे त असीं अॻिते पहिरियों वधंदासीं। ठीकु आहे। उहे हिदायतूं मां हिते अव्हांखे ॾियां थी, उन्हनि खे गौर सां ॿुधंदा ऐं उन्हनि ते अमल बि कंदा। कॉपी जे हवाले सां सभ खां पहिरीं त अव्हांखे ख़बर हुअणु खपे त छा करणु खपे। ठीकु आहे। असांजो अॼु मज़मून आहे सिंधी दर्जो 8वीं क्लास आहे न असांजी 8th क्लास। ठीकु आहे। मज़मून सिंधी दर्जो 8 ऐं इन खां अलावा असां वटि आसान सिंधी जी किताब 9वीं ऐं 10वीं क्लास लाइ सिंधी टेक्स्ट बुक बोर्ड वारनि जी अव्हां वटि मौजूदु हुअणु खपे। ठीकु। हिदायतूं जेके आहिनि कॉपी जे हवाले सां, कॉपी अव्हांखे ख़बर आहे त कॉपी जो जेको मथियां वारो हिसो आहे, आउटर जंहिंखे शीट चवंदा आहिनि, उन ते अव्हां ब्लैक कट मार्कर सां ऐं इनर जेका फेस शीट आहे जंहिं ते अव्हां पंहिंजो नालो वग़ैरह लिखंदा आहियो, उहा ब्लैक कट मार्कर सां, ॿई जेके आहिनि ब्लैक कट मार्कर सां लिखंदा। अंदरूनी सफ़े ते पंहिंजो नालो, वालिद जो नालो, क्लास, दर्जो, फ़रीक़ यानी सेक्शन, रोल नंबर, मज़मून वग़ैरह लिखंदा। ठीकु आहे। इहा अव्हांजो पहिरियों जीअं ते अव्हां नालो वग़ैरह लिखंदा आहियो। 3 नंबर आहे मीकात अवल। टाइटल पेज ठाहींदा आहियूं न असां। मीकात अवल जो टाइटल जेको सफ़ो आहे उहो ठाहींदा। ठीकु। उनखां पोइ भाङो, नसर जो भाङो जेको आहे उहो उनजो टाइटल पेज ठाहींदा, सफ़ो ठाहींदा, नसर भाङो जो सफ़ो ठाहींदा। उनखां पोइ जेको बि असांजो सबक़ु आहे, उनवान आहे, उनजे हवाले सां अव्हांखे ॿुधायो वेंदो त उहो उनजो उनजी हेडिंग विझी उनजे हेठां उनजे तारीख़ आगाज़ ऐं तारीख़ इख़्तिताम असां लिखंदा आहियूं, उहो लिखंदा। उनखां पोइ जेको आहे अवी उनजो अजमाली ख़ाको, ॿिए सफ़े ते अजमाली ख़ाको लिखंदा। अजमाली ख़ाको जेको आहे असां जंहिं बि तरतीब सां असां कमु कंदा आहियूं, उन सां अजमाली ख़ाको उन ई तरतीब सां अजमाली ख़ाको ठाहींदा। ठीकु। अच्छा। अजमाली ख़ाको ब्लू इंक पेन सां, ख़बर आहे न अव्हांखे त ब्लू इंक पेन सां अगरि तव्हां हेडिंग विझणु था चाहियो, मेन हेडिंग जेका आहे अजमाली ख़ाके जी उहा ब्लैक सां या ब्लू कट मार्कर सां। उन खां अलावा जेको ब्लू इंक पेन सां अव्हां जेको आहे अजमाली ख़ाको लिखंदा। उमेद आहे त नए दर्जे में बहितरीन लिखाईअ सां गॾु कमु कंदा ऐं मुंहिंजी तमामु हिदायतुनि ते अमल कंदा। जेके बि अव्हांखे हिदायतूं ॾिनियूं आहिनि, उमेद आहे त तव्हां उन्हनि ते अमल कंदा। ठीकु आहे। इहे त हुयूं कॉपीअ जे हवाले सां हिदायतूं। अव्हां सुठी राइटिंग सां गॾु पंहिंजी कॉपीअ ते कमु कंदा ऐं सफ़ाई सां कमु कंदा। इन खां अलावा हाणे लेक्चर जे दौरान अव्हांखे छा करिणो आहे, उनजे मुताबिक़ मां अव्हांखे कुझु हिदायतूं ॾेई रही आहियां। इन्हनि खे गौर सां ॿुधंदा, हेडफ़ोन जो इस्तेमालु कंदा, दर्स जे दौरान हथ मथे न कंदा, कॉपी ऐं पेंसिल पाण सां गॾु, यानी अव्हां वटि कॉपी ऐं पेंसिल हुजणु खपे। तव्हांखे अगरि कोई बि मसइलो आहे या कोई बि सुवालु पुछिणो आहे त पहिरियों इहो न थींदो सबक़ जे विच में ई अव्हां मूंखां पुछो। अव्हां जेको आहे पंहिंजी कॉपी ते लिखंदा ऐं सबक़ जे इख़्तिताम ते अव्हां जेको आहे उहो मूंखां सुवालु पुछी था सघो। नंबर 4 आहे आसान सिंधी टेक्स्ट बुक्स 9th क्लास लाइ पाण वटि खोले रखंदा। सभिनी सफ़नि ऐं मिलियल घर जे कम जा स्क्रीनशॉट वठंदा। मिलियल कमु पंहिंजी कॉपीअ में सफ़ाई सां कंदा। दर्स जे मुतालिक़ का बि ॻाल्हि सम्झ में न अचे या कोई बि सुवालु पुछिणो हुजे त सबक़ जे आख़िर में पुछंदा। ठीकु आहे। हीअ त हुयो असांजूं हिदायतूं। ठीकु आहे। हाणे असीं अॻिते वधी रहिया, मां खां कुझु सुवाल पुछी रही आहियां, उन्हनि जा मूंखे अवी जवाबु ॾींदा ऐं जल्दी सां मूंखे जवाबु ॾींदा ताकी मूंखे ख़बर पवे त जेको आहे अव्हांखे सुवालनि जा जवाब ॾिसंदासीं त केरु जेको आहे सही सुवालनि जा जवाबु ॾिए थो। पहिरियों सुवालु आहे मुंहिंजो, असीं केरु आहियूं? केरु आहियूं असीं? जल्दी सां चैट बॉक्स में मूंखे जवाबु ॾींदा, असीं केरु आहियूं? ठीकु आहे। असीं केरु आहियूं? पहिरियों सुवालु आहे, जल्दी सां चैट बॉक्स में ईंदा, हम कौन है, यानी असीं केरु आहियूं। शाबाश। असीं मुसलमान आहियूं। ठीकु, गुड। असीं केरु आहियूं? असीं मुसलमान आहियूं। शाबाश। सुवालु नंबर 2 आहे, असांजो मज़हब कहिड़ो आहे? यानी असीं मुसलमान हूं, बहसियत मुसलमान असांजो मज़हब कहिड़ो आहे? असां कहिड़े मज़हब जा पैरोकार आहियूं? असां कहिड़े मज़हब जी तालीमात ते अमल कंदा आहियूं? कहिड़ो मज़हब आहे असांजो?
जल्दी सां जवाबु ॾींदा। ठीकु आहे, शाबाश शाबाश। असांजो मज़हब जेको आहे उहो इस्लाम आहे। सवाल नंबर 3 आहे, इस्लाम जा बुनियादी रुकन कहिड़ा आहिनि? कहिड़ा आहिनि इस्लाम जा बुनियादी रुकन? घणा आहिनि ऐं कहिड़ा आहिनि? ठीकु आहे, इस्लाम जा बुनियादी रुकन कहिड़ा आहिनि? जल्दी सां मूंखे जवाबु ॾींदा। शाबाश। तौहीद यानी पहला कलमा जीअं उन ते असांखे जेको आहे सभ खां पहिरीं तौहीद, नमाज़, रोज़ो, ज़कात ऐं हज। ठीकु आहे, शाबाश। ही 5 असांजा इस्लाम जा बुनियादी रुकन आहिनि ऐं इन्हनि इहे जेके 5 आहिनि जंहिंजा नाला मां मूंखे ॿुधाया ऐं मां बि अव्हांखे हुननि जा नाला जेके आहिनि ॿीहर दोहिराया आहिनि। सवाल नंबर 4, 5 रुकन मां तव्हांखे ॿुधाया न तरतीब सां। ठीकु आहे, तौहीद, नमाज़, रोज़ा, ज़कात ऐं हज। त हे 5 रुकन कहिड़ो आहे? 5 रुकन इस्लाम जो 5 रुकन कहिड़ो आहे? शाबाश, जल्दी सां जवाबु ॾींदा। ठीकु, ओके। 5 रुकन सही, काफ़ी ॿारनि जेको आहे सही जवाबु ॾिना आहे। 5 रुकन जेको आहे उहो आहे हज। हज जेको आहे मुसलमान 5 असांजो इस्लाम जी बुनियादी रुकन मां हिकु आहे ऐं 5 रुकन आहे। ठीकु, ऐं हर साहिब इस्तिताअत यानी जेको बि हैसियत रखे थो, ठीकु आहे, जेको बि हैसियत यानी माली तौर ते जेको बि हैसियत रखे थो उहो ज़िंदगीअ में कम अज़ कम उनखे हिकु जेको मर्तबा आहे उहो हज करणु ज़रूरी आहे। त असांजो अॼु जेको सबक़ु आहे उहो आहे हजतुल विदा वारो ख़ुतबो। ठीकु आहे, हजतुल विदा वारो ख़ुतबो असांजो जेको आहे सबक़ु आहे। हज मुसलमाननि खे, जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त हज मुसलमाननि खे ज़िंदगीअ में कम अज़ कम हिकु चकर ज़रूरु करणु खपे। जेके बि साहिब इस्तिताअत यानी उन्हनि वटि जेके बि एतिरी हैसियत रखनि था त हू हज जी रक़म जेका आहे अदा करे सघंदा आहिनि, त हुनखे जेको आहे हज पंहिंजी ज़िंदगीअ में अदा करणु घुरिजे। मको, ठीकु आहे, ही खाना काबा जेको आहे उहो मक्का में मौजूदु आहे। मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैदाइश बि मक्का जी आहे। मक्का खे इन जी वजह सां, हिकु त खाना काबा जी वजह सां हुनखे अहमियत हासिलु आहे ऐं ॿियो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि उतां जो असांजो आख़िरी नबी जेको आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहो बि उते ई पैदा थियो हुयो, यानी हुनजी जेका जाइ पैदाइश आहे उहा मक्का में आहे। ठीकु आहे, त जॾहिं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमाननि खे बल्कि तमामु अरब में अव्हांखे ख़बर आहे न त अरब में कहिड़ी जहालत हली रही हुई। अरब जा माण्हू जेके हुआ मुसलमान जेके उहे उन्हनि केतिरियूं बुरायूं हुयूं। ठीकु आहे, केतिरियूं बुरायूं हुयूं जंहिंजी वजह सां जो आहे माण्हुनि जी जेका ज़िंदगी हुई उहा बद खां बदतर हुई। पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जॾहिं नबूअत मिली ऐं उन्हनि अलाह जो पैगाम उन्हनि ताईं पहुचायो त उन्हनि मुसलमाननि जॾहिं ॾिठो त हीअ त दीन जेको आहे उहो भलो आहे, उहो सभु हिन में कंहिं बि माण्हूअ खे जेका आहे यानी बरतरी हासिलु न आहे। सभिनी खे हिकु जहिड़ा कानून, हिकु जहिड़ा मतिलबु जेका इज़त ॾिनी वेंदी आहे। त इन जी वजह सां घणेई माण्हू जेके आहिनि मुसलमान थियण लॻा ऐं काफ़िरनि जॾहिं इहो ॾिठो त हुननि मुसलमाननि खे तकलीफ़ूं ॾियणु शुरू कयूं। त हाणे असीं ॾिसूं था ऐं पोइ हीउ सिलसिलो अॻिते हलंदो रहो ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीमात ते करोड़नि खां वधीक जेके आहिनि 90 करोड़ मुसलमान अॼु हिन दुनिया में मौजूदु आहिनि जेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ॾिनल तालीमात ते अमल करे रहिया आहिनि। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हजतुल विदा वारो ख़ुतबो इन करे हिनखे चयो वेंदो आहे त हीउ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छो जो हिकु जी ज़िंदगीअ जो पहिरियों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा त केतिरा ई कया हुया, पर हज जेको आहे उन्हनि हिकिड़ो ई कयो हुयो ऐं हुनजी ज़िंदगीअ जो आख़िरी हज हुयो ऐं हुन ॾींहुं हुननि ख़ुतबो ॾिनो हुयो जेको ख़ुतबो यादगारु आहे, जेको हुन ख़ुतबो जेको आहे इन जी मिसाल असांखे नथी मिले। इन जे करे हिनखे हजतुल विदा वारो ख़ुतबो चयो वेंदो आहे। हाणे असीं अॻिते वधी रहिया आहियूं। हजतुल विदा मक़सदु असांजा कहिड़ा हूंदा, असांजी सबक़ जॾहिं असां पढ़ंदासीं असांजा जेके मक़सद आहिनि उहे असीं जेके हासिलु कंदासीं उहो ॾिसंदासीं। सबक़ जे इख़्तिताम ते शागिर्दाणियूं हिन क़ाबिल थी सघंदियूं त सबक़ खे सही तलफ़ुज़ सां गॾु पढ़ी सघंदियूं।
सबक़ जो उर्दू तर्जुमो सम्झी सघंदियूं, नयनि लफ़्ज़नि जी माना लिखी सघंदियूं ऐं मश्क़ में मौजूदु सवालनि जा जवाब ॾेई सघंदियूं। ठीकु आहे, त हिते असां जेको आहे ही तमामु तरह जेके असांजा मक़ासिद आहिनि, मक़सद आहिनि, इहे असीं हासिलु कंदासीं। ही 4 मक़सद असांजा आहिनि। इनशा हिननि खे हाणे असीं वधी रहिया आहियूं अॻिते पंहिंजी सरगर्मी जी तरफ़। हजतुल विदा वारो ख़ुतबो। ठीकु आहे, हजतुल विदा वारो ख़ुतबो जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधायो त हजतुल विदा वारो ख़ुतबो छा आहे। यानी ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िंदगीअ जो पहिरियों ऐं आख़िरी हज, जंहिंजी वजह सां इनखे हजतुल विदा चयो वेंदो आहे। ठीकु आहे, ख़ुतबो छो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन में हिकु बहितरीनु ख़ुतबो जेको पूरी दुनिया जे माण्हुनि जे लाइ हिकु मिसाल हुई, मिसाली ख़ुतबो हो, उहो पेश कयो हुयो, उहो ॾिनो हुयो। इन जी वजह सां हिनखे यानी अलविदाई ख़ुतबो बि असां चई सघूं था हिनखे। ठीकु आहे, त मां हाणे सबक़ु पढ़ी रही आहियां, हिनखे गौर सां ॿुधंदा ऐं हिनखे सम्झण जी कोशिशि कंदा। ठीकु आहे, यानी पूरी कोशिशि हूंदी मां अव्हांखे जेको सबक़ु आहे सही तरीक़े सां सम्झाए सघां। इंशाअल्लाह अव्हांखे बि सम्झ में अची वेंदो। सफ़ो नंबर पहिरियों आहे असांजो। ठीकु आहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजतुल विदा वारो ख़ुतबो। पहिरियों पैराग्राफ आहे, हिजरी 10 साल जे ज़ुल्हज महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अटकल 1,40,000 मुसलमाननि जी जमात सां आख़िरी हज अदा कयो। मनासिक जी अदायगीअ खां पोइ, मनासिक जेके आहिनि उन्हनि खे चयो वेंदो आहे हज जे जेके अरकान हूंदा आहिनि, जेके हाजी इबादत जी मक़ामात हूंदा आहिनि न, उते हू जेके बि उते इबादत कंदा आहिनि, उन्हनि खे मनासिक यानी हज जा अरकान। ठीकु आहे, मनासिक जी अदायगीअ खां पोइ पाण अरफात जेका आहे मक्का खां 12 मील के फासले पे, मक्का से 12 मील के फासले पर एक मैदान है जहाँ हाजी हज के दिन खड़े होकर लबैक वगैरह लबैक जो है वो कहते हैं। ठीक है, अरफात एक मैदान है, ठीक, जहाँ पर हाजी जिते हाजी जेके आहिनि पंहिंजे जेके उते बिही करे लबैक चवंदा आहिनि, पुकारींदा आहिनि। ठीकु आहे, अरफात जे मैदान में ॾाची छा चइबो आहे, ॾाची चइबो आहे ऊंटनी। ठीकु आहे, ऊंटनी ॾाची ते चढ़ी ख़ुतबो ॾिनऊं। उहो ख़ुतबो मिसकीननि, ॿारनि, ज़ालनि ऐं यतीमनि जे हक़नि जो खुलियल पधरनामो हो। पधरनामो वाज़िह ऐलान जंहिंखे चयो वेंदो आहे। इन में पाण सॻुरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमाननि खे तौहीद जी अमानत ऐं क़ुरान जे दस्तूर खे साह सां सांढे रखण जो छा मतिलबु आहे, साह सां सांढे अज़ीज़, सभ खां प्यारी। ठीकु आहे, यानी उन ते अखियूं बंदि करे उन ते अमल करणु, उन ते यकीन करणु, उन जी पैरवी करणु ऐं उनखे सभ खां वधीक प्यारो रखणु। प्यारे जो मतिलबु ई इहो आहे न, त उन ते असां क़ुर जे ज़ाहिर सां ॻाल्हि आहे त असां क़ुर जी जेके बि तौर तरीक़ा जेको असांखे क़ुर ॿुधाए थो, दस्तूर चइबो आहे, जे कानून ऐं रस्म रिवाज जेके बि असांखे क़ुर शरीफ़ में जेके बि तालीमात ॾिनियूं आहिनि, उन्हनि खे असां बिल्कुलु अखियूं बंदि करे उन्हनि ते अमल कयूं। सांढे यानी अज़ीज़, हुनखे अगरि सिंपल अगरि आसान लफ़्ज़ में चवंदासीं, सांढे रखण जो ताक़ीद कयऊं। ठीकु आहे, ताक़ीद फरमायो, हिक ॿिए जी जानियुनि, लॼुनि, मालनि, ठीकु है, मिल्कियतुनि जे एहतराम रखण जी तलक़ीन कयऊं। ॿारनि सां शफ़क़त, यतीमनि सां महिरबानी ऐं मिसकीननि जी संभाल ऐं औरतुनि सां अदल ऐं संदन हक़नि जी हुरमत जो ताक़ीद कयऊं। संदन ख़ुतबे जूं के अहम ॻाल्हियूं हीअ आहिनि। हीअ असांजो पहिरियों पैराग्राफ हो, इन जे बारे में मां तव्हांखे तर्जुमो इन जो बिल्कुलु एज़ इट इज़ करे ॿुधाईंदमि, बिल्कुलु हुनजी जुमलनि जे हिसाब सां तव्हां गौर सां ॿुधंदा। हिजरी 10 साल के ज़ुल्हज महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम अज़ कम, अटकल कहते हैं कम अज़ कम 1,24,000 मुसलमानों की जमात के साथ आखिरी हज अदा किया। उनकी ज़िंदगी का आखिरी हज था। मनासिक की अदायगी के बाद जो मनासिक हैं, जो भी हज के अरकान थे, ठीक है, उसकी अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में ऊंटनी पर चढ़कर एक खुतबा दिया। वो खुतबा मिस्कीनों, गुलामों, यानी औरतों और यतीमों के हुकूक का जो है वाज़िह ऐलान था। ठीक है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तौहीद की अमानत और कुरान के दस्तूर को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखने की ताकीद की। एक दूसरे की जानें
ایک دوسرے کی عزتوں لجن کہتے ہیں عزتوں کو، ٹھیک ہے، یہ لجن لکھا ہوا ہے، لجن کہتے ہیں عزتوں کو، ایک دوسرے کی جانیں، ایک دوسرے کی عزتیں اور ایک دوسرے کی ملکیتوں کا احترام کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے غلاموں کے ساتھ شفقت، یتیموں سے مہربانی اور مسکینوں کا خیال اور عورتوں کے ساتھ عدل اور ان کی عزت، ٹھیک ہے، ان کے حقوق کی عزت کی تاکید کی، ٹھیک ہے، اور اور ان کے خطبے کی کچھ اہم باتیں اور بھی ہیں، جو کچھ اہم باتیں جو ہیں ان کے خطبے کی جو ہے وہ اور بھی ہیں، جو کہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے۔ چالیے हिन पैराग्राफ में असांखे छा सम्झायो वियो؟ हिन पैराग्राफ में इहा ई ॻाल्हि ॿुधाई वई त हीउ जेको हज हुयो, ॾहीं ज़ुल्हज ते जेको आहे महीने में, ज़ुल्हज महीने में 10 साल जे हिजरी जेका हिजरत कई हुई हुनजे 10 साल जे ज़ुल्हज महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज़ कम 1,40,000 जी कम अज़ कम 1,40,000 मुसलमाननि सां गॾु हज अदा कयो। ऐं छो हुजूर सल्लल्लाहु उन वक़्तु जेको आहे उठनि ते जेको आहे सवारी कई वेंदी वेंदी हुई, त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिकु ऊठ यानी अची हुई, जंहिं ते वेही हुननि ख़ुतबो अदा कयो हुयो, ताकी तमामु मुस्लमाननि खे जेको आहे मुस्लमान मूंखे ॾिसी सघनि आसानी सां, ऐं मुंहिंजो आवाज़ हुननि ताईं पहुची सघे। अच्छा, तमामु तर जेके बि अरकान हुया हज जा अदा कया, ऐं हज जा अदा करण खां पोइ हुननि जेको आहे कंहिंजी लाइ हिकु वाज़ह पहलान हो मिसकीननि लाइ, ठीकु आहे, ॿानहनि लाइ, ज़ालुनि ऐं यतीमनि लाइ। छो जो ग़ुलामनि खे उन वक़्तु बदतरीन उन्हनि सां सलूक कयो वेंदो, ग़ुलाम उन वक़्तु ख़रीद कया वेंदा हुआ, ऐं उन्हनि सां जहिड़ो बि सलूक कयो वञे हुननि जी, छो जो मालिक हुयो, मालिक जेको बि उन्हनि सां सलूक कंदो उन्हनि खे उहो सभु कुझु करिणो, ऐं हू जहिड़ो बि उन सां सलूक करे उन खां कोई बि पुछण वारो न हूंदो हुयो। इन ई तरह सां जेके यतीम हूंदा हुया, पाण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण बि यतीम हुआ, ऐं यतीमीअ जो यतीमनि जो अहसासु हुननि खे चङी तरह हुयो, ऐं हुननि इन जे करे यतीमनि जे बारे में ॿुधायो त हुननि सां महिरबानी कयो। ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकु इरशाद बि आहे, हदीस बि आहे त यतीमनि सां जेको सुठो सलूक कंदो उहो जन्नत में मूंसां गॾु ईअं हूंदो जीअं शहादत जी उंगली हूंदी आहे न। शहादत जी उंगली कहिड़ी हूंदी आहे? अंगूठे जे जेके बराबरि वारी उंगली जेका आङुर हूंदी आहे, उनजी शहादत जी उंगली, ऐं जेका वॾी उंगली उनमें बराबरि वारी उंगली आहे, उन्हनि खे असीं पाण में मिलाईंदासीं त यानी हुननि उंगलियुनि जो इशारो करे ॿुधायो त हू मूंसां गॾु ईअं हूंदो जीअं हे ॿई उंगलियूं आहिनि। त जेको यतीमनि सां महिरबानी कंदो, उन्हनि जे मथे ते हथु रखंदो, उन्हनि जो ख़्यालु रखंदो, ऐं मिसकीननि जी जो बि संभाल जो ऐं उन्हनि जे ख़्यालु रखण जो ताक़ीद कयईं। औरतुनि सां उन वक़्तु ॾाढो बुरो सलूक कयो वेंदो, औरतुनि खे उन्हनि जा हक़ न ॾिना वेंदा, औरतुनि सां नफ़रत कई वेंदी हुई। ऐं अगरि कंहिंजे घर में का ॿार यानी का बि छोकिरी पैदा थिए त हू पंहिंजो पाण खे सम्झंदो त हिकु का वॾी मुंहिंजे लाइ हिकु गार आहे, यानी हीअ मुंहिंजी बेइज़तीअ जो मक़ाम आहे त मुंहिंजे घर में जेका आहे धीअ पैदा थी आहे। अल्लाह ताला खे जंहिंजे घर में अलाह ताला फरमायो त जंहिंजे घर में जेके धीअर आहिनि उहे मुंहिंजी मतिलबु उन्हनि जे मथां मुंहिंजी रहमत हूंदी। अगरि कंहिंजे घर में धीअ पैदा थिए थी त जेके धीअर आहिनि उहे रहमत आहिनि। त उन औरतुनि जे हक़नि ऐं औरतुनि जी अदल ऐं उन्हनि जी इज़त करण जी ताक़ीद कयूं, उन्हनि जो एतिराम करण जी ताक़ीद कयूं। हिन ख़ुतबे में हू तमामु तर जेके बि बुरायूं जेके अरब शहर में हुयूं, अरब मुल्क में हुयूं, उन वक़्तु उन्हनि खे रद्द कयूं, ऐं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुलु वाज़ह इहे सभु शयूं ॿुधायूं, ऐं इन ई करे औरतुनि सां इंसाफ़ करण जो ताक़ीद कयो, औरतुनि जी इज़त करण जी ताक़ीद कई। ठीकु आहे, हाणे असीं अॻिते वधी रहिया आहियूं ॿिए पैराग्राफ जी तरफ़। ॿियो पैराग्राफ आहे अॼोके ॾींहुं जाहिलियत उन वक़्तु जेके अरब में जहालत हली रही हुई, जीअं अव्हांखे मां ॿुधायो त उन में अरब मुल्क में असीं अॻिते पढ़ंदासीं त कहिड़ियूं कहिड़ियूं हिन में बुरायूं मौजूदु हुयूं। जाहिलियत जी समूरियुनि रस्मुनि खे पंहिंजनि पेरनि हेठां लताड़ियां थो। ठीकु है, ये मुहावरा, ठीकु, पेरनि हेठां लताड़नि, पांव तले रोंदना। अलाह ताला अव्हां खां जाहिलियत जूं गुमराहियूं दूरि कयूं, ऐं नज़्मी जो ख़ानदान
جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ اگر کوئی کسی خاندان میں کوئی بڑا اونچا مقام حاصل تھا کسی خاندان سے، تو اس کو وہ نسل در نسل چلتا آ رہا تھا. ٹھیک ہے، نسبی فخر ختم کرے چھॾیائين مومن عزت وارو ऐं فاجر ذلیل ہے. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ سب سے بڑھ کر سب سے جو اعلیٰ مقام ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ مومن کو. ٹھیک ہے، مومن کو انہوں نے جو نسل در نسل، یعنی کہ وہ کوئی امیر ہے بہت ہی بڑا، یا اس کو کوئی بڑا مقام حاصل ہے تو اس کی بڑا رتبہ حاصل تھا اسے، تو وہ رتبہ بھی ختم کر دیا. یعنی کوئی امیر غریب نہیں ہے، صرف عزت اس آدمی کو حاصل ہے جو مومن ہے. ٹھیک ہے، مومن جو ہے وہ عزت والا ہے. ऐं فاجر ذلیل ہے. اॼ کھان पोइ عربीअ खे अजमीअ ते ऐं अजमीअ खे अरबीअ ते का बि फज़ीलत कान आहे. सभु इंसान आदम जो औलाद आहे ऐं आदम खे मिटीअ मां पैदा कयो वियो. ठीकु आहे، हर को मुस्लमान ॿिए मुस्लमान जो भाउ आहे ऐं सभु मुस्लमान हिकु बिरादरी आहिनि. हाणे मां हिन जो तर्जुमो करे रही आहियां، गौर सां ॿुधंदा. मैं आज के दिन जहालत की तमाम तर रस्मों को अपने पाँव तले रोनता हूँ. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جہالت کی تمام تر گمراہیوں کو دور کر دیا ہے. یعنی جو میں نے آپ کو تعلیمات دی ہیں اب ان پر آپ اگر عمل کریں گی، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا غلط چیزیں تھیں، کیا برائیاں تھیں یہاں پر، تو ان سب سے آپ نے دور ہونا ہے. اور تمام تر جو جہالت کی گمراہیاں ہیں، آپ جو گمراہ تھے اس وقت تک جس جہالت میں آپ موجود تھے، جس جہالت کی چیزوں میں آپ لوگ گمراہ تھے، برائیاں جو آپ میں موجود تھیں، اب وہ تمام تر ختم ہو گئی. نسبی یعنی خاندانی جو فخر تھا اس کو میں نے ختم کر دیا ہے، یعنی وہ ختم ہو گیا. یعنی خاندان میں اگر کوئی بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا تو اس کو بڑا مقام حاصل ہوا کرتا تھا. مومن عزت والا اور فاجر ذلیل ہے. فاجر فاسق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور. آج کے بعد عربی کو اجمی پر، عربی جو تھے وہ عرب ملک میں رہنے والے جو لوگ تھے، لیکن اجمی جو عرب ملک سے دوسرے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، یعنی پوری دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے تھے جو عرب ملک میں رہا کرتے تھے، اس کو عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. ہر یعنی تمام تر مسلمان ایک دوسرے کے تمام مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں. یعنی تمام تر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور سب مسلمان ایک برادری ہیں. یعنی اپنی اب یہاں پر کیا چیزیں بتائی گئیں، हिते जेको आहे असांखे ॿुधायो वियो त जहालत जी जेके तमामु तर जेके अरब मुल्क में जेके बि जहालतूं मौजूदु हुयूं, मां अॼु उन्हनि जो तौरु ॿुधायो, उन्हनि जो हल ॿुधायो, मां अव्हांखे सिधो रस्तो ॾेखारियो आहे. अल्लाह ताला अव्हां मां गुमराहियूं यानी जेके जीअं गुमराह राह यानी भटकियल राह ते अवी हली रहिया हुआ, हाणे उहे तव्हां मां ख़तमु थी वयूं आहिनि. अच्छा, ख़ानदानी सिलसिलो हूंदो हुयो जीअं माण्हू हिक ॿिए खे जेके हुया यानी अगरि कोई वॾो को ख़ानदान सां तालुक़ु रखे थो त हुनखे वॾो यानी इज़त ॾिनी वेंदी हुई, उहो बि सभु ख़तमु करे छॾियईं. कोई बि अव्हां में यानी असां सभु मुस्लमान आहियूं, ठीकु आहे, ऐं असीं सभु हिकु बिरादरी आहियूं. फ़र्क़ु मिटाए छॾियईं न, जॾहिं सभु चयईं त सभु मुस्लमान आहियूं, हिक ॿिए जा भाउ भेण आहियूं, त भाउ भेण में असां में त इहो त न हूंदो आहे न त इनखे वॾो को मर्तबो ॾिनो वञे, हीअं आहे हीअं आहे हीअं आहे, त इन करे हुननि ख़तमु करे छॾियो त मुस्लमान हिक ॿिए जा भाइर आहिनि. ऐं असांखे छा सां अरबीअ खे अजमीअ ते ऐं अजमीअ खे छो जो का बि फज़ीलत हासिल आहे. सभु जेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभु फ़र्क़ु मिटाए छॾिया ऐं उन्हनि खे चयाईं त तव्हां सभु हिकु आदम जी औलाद आहियो. यानी अव्हां जॾहिं हिकु आदम जी औलाद आहियो त पाण में सभु भाइर थियो. ऐं आदम खे छा सां पैदा कयो वियो? मिटीअ सां पैदा कयो. ऐं इंसान खे मिटीअ सां ई पैदा कयो आहे, हुनखे दफ़न बि मिटीअ मां ई थियणो आहे. वञिणो आहे न असांखे मिटी में ख़ाक में मिली वञिणो आहे, मिटीअ में मिली वञिणो आहे. त इन जे करे सभ खे हिक ॿिए ते लाज़िम आहे त हू हिक ॿिए जी इज़त करनि, हिक ॿिए जे हक़नि ऐं हिक ॿिए जी जेके माल ऐं मिल्कियत आहे उन्हनि जो एतिराम करणु. ईअं हूंदो हुयो त पहिरियां हिक ॿिए जी बसि जेको मतिलबु ताक़तवर हूंदो हुयो उहो कमज़ोर जी मिल्कियत ते इन ते कब्ज़ो करे छॾींदो हुयो. त इन जे करे हुननि इन शइ खे बि फोकस कयो आहे त जेके बि हिक ॿिए जूं माल मिल्कियत आहिनि
ٹھیک ہے उहे ख़तमु करे छॾियईं यानी अव्हां में कोई बि हिक ॿिए खां वॾो न आहे सभु हिक ॿिए जे बराबरि आहे ठीकु आहे हाणे असीं अॻिते वधी रहिया आहियूं ऐं इंसानो पंहिंजे ग़ुलामनि जो ख़्यालु रखो जेकी अञी खाओ सो हुननि खे खारायो ऐं जेकी अव्हां पहिरियों सो ई हिननि खे पहिरायो ठीकु आहे ऐं इंसानो अपने ग़ुलामों का ख्याल रखें जो आप खाएं वो उन्हें खिलाएं और जो आप पहने वो ही उनको भी पहनाएं यहाँ पर साफ बात जो है बताई गई मैंने आपको बताया था कि गुलामों के साथ किस तरह का रवैया रखा जाता था गुलामों को खरीदा जाता था और वो उनकी मिल्कियत हो जाया करती थी और उनके साथ वो जिस तरह से भी उनके साथ रवैया रखते उनमें कोई भी कहने वाला कोई भी पूछने वाला नहीं होता था चाहे उनको मारें चाहे उनको जलील करें चाहे उनको खाना दें चाहे उनको ना दें ये उनके ऊपर हुआ करता था तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह बता दिया कि गुलामों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए अच्छा रवैया रखना चाहिए और जो खुद खाएं उन्हें खिलाएं जो खुद पहने वही उन्हें पहनाएं ठीक है अच्छा जी हाणे असीं अॻिते वधी रहिया आहियूं औरतुनि जे मामले में ख़ुदावंद ताला खां डिॼंदा रहो डिॼंदा मतिलबु डरते रहो औरतुनि ते अव्हां जा ऐं हुननि जा अव्हां ते हक़ आहिनि अव्हां जूं जानियूं ऐं अव्हां जा माल हिक ॿिए ते अहिड़ी तरह हराम कया वञनि था जहिड़ी तरह अॼोके ॾींहुं हिन शहर में खून खराबी हराम थियल आहे ठीक है औरतों के मामले में खुदावन ताला से डरते रहो औरतों के आप पर और उनके यानी औरतों के आप पर और आपके उन पर ठीक है हुकूक हक है हुकूक हैं आप उनकी जान और माल की अच्छा आप ठीक है आपकी जानें और आपके जो माल एक दूसरे पर इस तरह से हराम किए गए हैं जिस तरह के आज के दिन पर इस शहर में खून खराबा हराम किया गया है ठीक है तो यहाँ पर साफ बात है जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चियाँ अगर पैदा हुआ करती थी तो वो अपने आप को यानी ज़िल्लत का मकाम समझते थे यानी उनके लिए बहुत यानी बेइज्जती का मकाम हुआ करता था कि उनके घर में अगर कोई भी बेटी पैदा हो तो इस वजह से वो क्या करते थे कि अपनी बच्चियों को जो है वो जिंदा दफन कर दिया करते थे हम सोच भी नहीं सकते मतलब हम सोचते हुए भी डरते हैं कि इस तरह से होता था उनको यानी एक कब्र खोद यानी गड्ढा खोद कर या कब्र खोद कर उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं यहाँ पर तो आगे हम चलते हैं कि आप और उन्होंने क्या कहा कि आपके माल क्योंकि एक दूसरे पर हराम कर क्योंकि जो भी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो जो मतलब ताकतवर हुआ करता था तो वो कमज़ोर के माल पर कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको उसकी मिल्कियत वगैरह जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया करता था ठीक है अच्छा जी हाणे असीं अॻिते वधी रहिया आहियूं पंहिंजे पैराग्राफ अॻिते जी पैराग्राफ जी तरफ़ ठीक अच्छा जी असांजो ॿियो पैराग्राफ आहे आउं अव्हां वटि हिकु अहिड़ी शइ छॾे वञी रहियो आहियां जेकॾहिं उनखे मज़बूतीअ सां झलींदा त कॾहिं बि गुमराह न थींदा उहो आहे अल्लाह जो किताब ठीकु आहे मां ने उर्दू तर्जुमो करे रही आहियां ठीक मैं आपके पास एक ऐसी चीज़ छोड़ कर जा रहा हूँ अगर उसको मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगी और वो है अल्लाह की किताब त हिते अव्हांखे ॿुधायो वियो आहे त सभ खां यानी बहितरीनु जेका शइ आहे असांजी उहा असां वटि जेका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजी हिदायत जे लाइ हिते छॾी आहे उहा आहे क़ुरान पाक जी तालीमात ते असां जॾहिं अमल कंदासीं त असां बहितरीनु तरीक़े सां पंहिंजी ज़िंदगी जेका आहे गुज़ारे सघूं था ठीकु आहे और असां कॾहिं बि गुमराह न थींदासीं अगरि असां तालीमात क़ुरान पाक जी तालीमात ते अमल कंदासीं त असां कॾहिं बि गुमराह न थींदासीं अच्छा जी हाणे असां अॻिते वधी रहिया आहियूं सफ़े नंबर 3 ते पैराग्राफ आहे कर्ज़ अदा कयो वञे उधारी शइ वापसि ॾिनी वञे ज़ामिन कर्ज़ भरे ॾियण लाइ बदल आहे कर्ज़ वापस किया जाए और जो उधार लिया गया था कोई भी चीज़ उधार ली गई थी तो वो वापस दी जाए और ज़ामिन जो उसका जो ज़ामिन एक ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है अगर कोई शख्स लेता है तो उसके बीच में एक शख्स जो है वो उसकी ज़मानत रहता है कि हाँ कुछ दिनों के बाद जो है अगर मैं जो है आपके पास 10 रुपये रखवाती हूँ ठीक है और मैं कहती हूँ कि मुझे जो है 10 रुपये या पैसे कुछ कितने भी रखवाती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इतने दिनों के बाद मैं आपको लौटा दूँगी तो आप मुझसे कहेंगे कि इसकी क्या ज़मानत है कि आप मुझे वापस करेंगी तो मैं किसी न किसी को जो जिसकी आप इज़्ज़त करते हो जिसकी मैं इज़्ज़त करती हूँ तो उसको मैं बीच में लाऊंगी और उसके सामने मैं इकरार करूँगी कि हाँ मैं इनको जो है इतने दिनों के बाद जो है वो पैसे वापस करूँगी अगर नहीं दिए
تو آپ اس کو دے دیجیے گا۔ تو یہ ہوتا ہے ضامن، یعنی بیچ میں ایک شخص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے قرض جو تھا اگر کوئی لے لیا کرتا تھا تو وہ واپس نہیں کرتے تھے، تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بھی انہوں نے دھیان دلایا اور یہ بات واضح کر دی کہ قرض جو ہے آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے، اور اگر کوئی قرض نہیں دے گا تو جو ضمانت جو لے رہا ہے شخص وہ قرض دینے کے ذمہ دار ہوگا۔ اچھا جی، ہاں اسی اॻिते वधी रहिया आहियूं। अॻिते पैराग्राफ जी ख़बरदार मता मुंहुं खां पोइ गुमराह थी वञो ऐं हिक ॿिए जूं सिसियूं कहते हैं गर्दनों को सिसियूं लाहींदा रहो। अव्हां खे अलाह ज़ुल जलाल जे आॾो यानी सामने हाज़िर थियणो आहे। उहो अव्हां जे अमलनि बाबति अव्हां खां पुछाणो कंदो। ॾोहारी पंहिंजे ॾोह लाइ ख़ुदि ज़िम्मेवार आहे, पीउ जी ॾोह लाइ पुटु ऐं पुट जे ॾोह लाइ पीउ ज़िम्मेवार न आहे। जेकॾहिं को बिना कारो ऐं शीदी शख्स, ٹھیک ہے، کالا اور جو ڈارک جیسے افریقن لوگ ہوتے ہیں بالکل ڈارک ان کا شیڈ ہوتا ہے، کہ اگر کوئی بھی کالا اور بہت کالا یعنی شیدی جو شخص ہے وہ آپ کا امیر بن جائے تو آپ کو اللہ اور اواں کے اللہ تعالیٰ جی کتاب جو موافق ہلائے تو انہیں جی اطاعت فرما برداری کرو۔ یہاں پر جو ترجمہ ہے، خبردار میرے بعد گمراہ نہیں ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں نہ اتارنا۔ آپ کو اللہ ذل جلال کے سامنے یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور وہ آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ جرم کرنے والا اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ والد کے جرم کے لیے بیٹا اور بیٹے کے جرم کے لیے والد ذمہ دار نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کالا یا مطلب جو ڈارک کمپلیکس والا ہے، بہت ہی کالا جو شخص ہے، آپ کا امیر بنا دیا جائے اور آپ کو، لیکن وہ کیا کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق یعنی قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ آپ کو چلا رہا ہو، تو آپ کو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورا ہے کالا ہے، ہم اس کے بارے میں یعنی فرق رکھا جاتا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا حکمران جو امیر ہے، حاکم ہے، چاہے کتنا بھی کالا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اطاعت کب کرنی ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کے مطابق آپ کو چلائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہو اس سے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی فرمان دے رہا ہے تو آپ نے اس کو نہیں ماننا، یعنی یہاں پر کلر وغیرہ جو ہے سب کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہی کیا ہوتا تھا کہ اگر بیٹا جو ہے جرم کرتا تھا تو اس کے والد کو سزا دی جاتی تھی، اور والد اگر جرم کرتا تھا تو بیٹے کو سزا دی جاتی، تو یہ اس چیز کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف وہی ذمہ دار ہے جو جرم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ पंहिंजे ख़ालिक जी इबादत करियो, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ियो, माह रमज़ान में रोज़ा रखो ऐं दीनी हुक्मनि जी अताअत करियो त अल्लाह ताला जी जन्नत में दाख़िल थी वञो। ये आसान से है, अपने खालिक की इबादत करें, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, माह रमज़ान में रोज़े रखें और दीनी अहकामात की अताअत करें और अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल, यानी तमाम तरी काम जब हम करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ करेंगे तो हम अल्लाह ताला की जन्नत का वादा हमें दिया गया है कि हम जन्नत में दाखिल होंगे। अॻिते वधी रहिया आहियूं। मज़हब ऐं इंतिहा पसंदीअ खां बचंदा रहिजो, छाकाणि त अव्हां खां अॻियूं क़ौमूं बि इन ई करे टोलियूं थी तबाह थी वयूं। यानी मज़हब में जो इंतहा पसंदी है, यानी उससे बचते रहें, क्योंकि आप से पहले वाली जो कौमें हैं वो भी इस तरह से ग्रोह बनकर तबाह बर्बाद हो गई थी, ठीक है। यानी मज़हब में किसी काम या चीज़, मज़हब में इंतहा पसंदी किसको कहते हैं? मतलब किसी काम या चीज़ की इंतहा चाहना, ठीक है। तो इस चीज़ को उन्होंने मना किया है। अच्छा जी, अॻिते वधी रहिया आहियूं। ख़ुतबे खां पोइ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खां पुछो छा मूं अव्हां ताईं अल्लाह ताला जो पैगाम पहुँचायो? खुतबे के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या मैंने आप तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा दिया? माण्हुनि जवाब ॾिनो हा, ठीक है, बचा दिया। ॿियो पैराग्राफ आहे, माण्हुनि जवाब ॾिनो हा, ए अल्लाह जा रसूल, अव्हां अल्लाह ताला जो पैगाम असां ताईं पहुचायो। इहो जवाब ॿुधी पाण फरमायाऊं, अल्लाहुम्मा अशहद, यानी ए मुंहिंजा मौला तू शाहिद थी जाए। यानी लोगों से पूछा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए अल्लाह के रसूल, मानुन ने, लोगों ने जब उन लोगों से पूछा उन्होंने तो लोगों ने जवाब दिया कि हाँ ए अल्लाह के रसूल, आपने अल्लाह ताला का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। और ये जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशहद की जो उंगली है आसमान की तरफ मुँह किया और अशहद की उंगली उठाकर कहा कि अल्लाहुम्मा अशहद, यानी ए मेरे मौला, ए मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, तुम गवाह रहना
کہ میں نے لوگوں تک آپ کا جو پیغام ہے پہنچا دیا، اس کی گواہی بھی میں نے جو ہے وہ لوگوں سے لے لی ہے۔ خطبے جے پچھاڑीअ में पाण सॻुरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी मुसलमाननि खे अलविदा चयो ऐं अलविदा चयो ऐं चयाईं फरमायाईं पाण फरमायाईं। ॿियो पैराग्राफ ते आहे, अलविदा चयो ऐं ताक़ीद फरमायाऊं त जेकी शख़्स हिते मौजूद आहे सॻे मौजूद शख़्स ताईं ये पैगाम पहुंचाएं। यानी उन्होंने खुतबे के आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको अलविदा कहा और तमाम मुसलमानों से ये कहा कि जो भी यहाँ पर गैर मौजूद शख्स है मेरा ये तमाम तर जो पैगाम है उन तक पहुँचा दिया जाए। अच्छा जी, हम आगे बढ़ रहे हैं। अॻिते वधी रहिया आहियूं। हेठि लफ़्ज़नि जी माना लिखो। बरंदे, वापस लौटते, ॾो, जुर्म, बानन, गुलामों, दुहारी, मुजरिम, बदनामो, वाज़ह ऐलान, लजन, इज़्ज़तों, पुछाणो, पूछगछ, पिछाड़ी, आखिर में, झलींदा, पकड़ना, रिजंदा, डरते रहो, बदल, जिम्मेवार, सिसियूं, गर्दनें, अटकल, कम अज़ कम, सांढे रखण, जान सां अज़ीज़, स्क्रीन शॉट वठंदा गॾु। नज़दीक, ख़ानदानी नफ़्स से, दस्तूर, कानून, रस्म रिवाज, टोलियूं, ग्रोह, ॾाची, ऊंचनी, पारायो, खिलाओ, हिक ॿिए, एक दूसरे। ठीकु आहे, ये अल्फाज़ माने हुया। अल्फाज़ माने खां पोइ असांजो अॻिते जेको कुझु असांजा सुवाल जवाब आहिनि उहे असांजा रहनि था, उहे इंशाल्लाह असां अॻिते कंदासीं। ठीकु आहे। अच्छा, ही अव्हांजी कॉपी आहे। कॉपी ते अवी कहिड़े तरीक़े सां लिखंदा, नालो, बालिग जो नालो, रोल नंबर, दर्जो, सेक्शन, मज़मून, मज़मून मास्तरियाणी, दर्जे जी मास्तरियाणी। ठीकु है। मीकात पहिरियों 2 खां नवंबर ताईं 2021 नसर जो भाङो। ही अव्हांजो टाइटल सफ़ो आहे। टाइटल सफ़े खां पोइ अवी अजमाली खाको इन जो स्क्रीनशॉट वठंदा। ठीकु आहे। इन खां अलावा असांजे सबक़ जो इख़्तिताम थी चुको आहे ऐं असांजो टाइम ख़तमु थियो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।